Hello friends, welcome to H3 Diamond Academy. In the last lecture, we have started the discussion on the dihedral group. So let us continue our discussion. So what we have seen in the previous lecture is that a dihedral group is noted as Dn. Okay, so this is nothing but group of symmetry of a n-sided regular polygon. N-sided regular group of symmetry of n-sided regular polygon. Okay, so we have the total number of elements in Dn is 2n. And half of the element, that is n number of element, is rotational one, and other half, that is n number of elements, are reflexive one. Okay, so by regular polygon we mean sides are equal plus interior angles are also equal. Okay, so the example are equilateral triangle, sides are equal as well as interior angles are equal. We have a square, sides are equal as well as interior angles are also equal. Now we have hexagon, sides are equal as well as interior angles are also equal. So this is 3-sided regular polygon, this is 4-sided regular polygon, this is 6-sided regular polygon. Okay, so this we have discussed in detail in the last lecture. Okay, also we have calculated the elements of D4. Okay, so D4 is nothing but group of symmetry of a 4-sided regular polygon. Okay, so in the last lecture we have calculated the elements of D4. Okay, so the elements of D4 are R square, R cube, R to the power 4, and R to the power 4 is identity. Okay, now we have single reflection. Now we have single rotation on this reflection, SR, 2 times rotation on single reflection, this is SR square, and we have SR cube, 3 times rotation on this reflection. Okay, this is 1 time rotation, this is 2 time rotation, this is 3 time rotation, and this is 4 time rotation. Okay, so n times rotation on n-sided regular polygon gives identity. ठीक है, तो अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैं 3 टाइम्स रोटेशन करूं तो r टू द पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अगर मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें मैं 4 टाइम रोटेशन करूंगा, r टू द पावर 4, तो आइडेंटिटी आ जाएगा. ठीक है, और मेरे पास अगर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, तो इसमें 6 टाइम्स रोटेशन करने पे r टू द पावर 6 आइडेंटिटी आ जाएगा. ठीक है, तो D4 में क्या होगा, r टू द पावर 4 आइडेंटिटी आएगा. D3 में क्या होगा, D3 में r टू द पावर 3 आइडेंटिटी आएगा. तो D3 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो D3 का एलिमेंट हो जाएगा r स्क्वायर, r टू द पावर क्यूब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. उसके बाद वन टाइम रिफ्लेक्शन लेना है s. ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के ऊपर सिंगल रोटेशन, तो SR, रिफ्लेक्शन के ऊपर 2 टाइम रोटेशन, r स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो ये जो 3 एलिमेंट है वो क्या है, तुम्हारा रोटेशनल वाला, और बाकी के 3 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ D3. ठीक है, D3 का एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस शो दिस. Okay, so let us calculate the elements of D3. Okay, so we have a 3-sided regular polygon. Okay, so D3 is a dihedral group of 3-sided regular polygon. So we have a 3-sided regular polygon. Okay, let us name this A, this is B, and this is C. Okay, so in a dihedral group, the elements are generated by a subsequent rotation of theta, and the theta is given as theta is equal to 360 upon n. Okay, so for D3, the elements are generated by a subsequent rotation of theta given by 360 upon 3, that is 120 degree. Okay, so we have to rotate these elements. We have to rotate this element
120 degree at a time. Okay, so the elements of D3 are generated by a rotation of subsequent rotation of 120 degree. Okay, so let us do the rotation for generating the elements of D3. Okay. Okay, so this is three-sided regular polygon. Let us name this. This is A, this is B, and this is C. Let us do 120 degree rotation. So we have, let us rotate this. So this is A, sorry, this is A. A will go here, no? This is getting rotated. So this is A will go here, B will come here, and this is C. Now let us do 120 degree rotation again. So we will have, okay, so this is again rotated. So this is B, this is A, and this is C. Again do the rotation 120 degree. Again do the rotation. So this is A, this is C, and this is B. Okay, so this is the original element. Okay, so this is R0, this is R120, this is R240, 120 plus 120, this is 240, and this is R360. Okay, so we have this as identity element. Okay, so the original position of element is identity element. So this is R120, this is one time rotation is R240, this is two times rotation, so this is R square. R360 is three time rotation, and three time rotation is nothing but identity element in case of D3, because in case of Dn, n time rotation, that is R to the power n, is identity element. So for D3 we have three time rotation is identity element. Okay, so the rotational element will be R square, R cube. Okay, R cube तो identity हो गया, and initial position is also identity. So R0 is identity and R360 is identity, because if we do this rotation three times, then we get the identity element. समझ में आ रहा है? So we have the elements as R square and identity element. ठीक है? So R square and R cube is nothing but identity element. So these are the rotational element. ठीक है? तो D3 में कितने एलिमेंट होंगे? D3 में 6 एलिमेंट होंगे, तो बाकी के थ्री एलिमेंट्स जो है वो रोटेशनल वाला होगा, बाकी के थ्री जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव वाला होगा. समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल हो गया, और रिफ्लेक्शन वाला लिखो. रिफ्लेक्शन वाला कैसे करेंगे? लेट अस टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लो. तो रिफ्लेक्शन लेने पे क्या आएगा? दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ये रिफ्लेक्शन लेने पे आया. अब रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या करते हैं? इसमें हम रोटेशन करते हैं. रोटेशन समझ में आ रहा था? 120 डिग्री से रोटेशन करो. ठीक है, तो हटा दो यहाँ से. ठीक है, तो 120 डिग्री रोटेशन करने पे क्या आ जाएगा? देखो, दिस इज ए, रोटेट दिस बाय 120 डिग्री, दिस इज एस. ओके, अब रिफ्लेक्शन के ऊपर एक सिंगल रोटेशन, तो दिस इज एस आर. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो, इसको रोटेट करने पे तो ए विल कम हेयर, बी विल कम हेयर, एंड दिस इज सी विल कम हेयर. ठीक है, एक बार और रोटेशन करो तो क्या आ जाएगा इसमें? ये क्या हो जाएगा? एस आर स्क्वायर. ठीक है, रिफ्लेक्शन के ऊपर टू टाइम रोटेशन. तो रोटेट करो इसको, तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया. ठीक है, अब एक बार और रोटेशन करो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? देखो, रोटेशन करने पे क्या होगा? बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा. तो ए बी सी. ठीक है, ए बी सी, तो ये भी एस हो गया ना. और ये क्या है? एस आर क्यूब. देखो, ये रिफ्लेक्शन के ऊपर टू टाइम रोटेशन, ये क्या है? रिफ्लेक्शन के ऊपर थ्री टाइम रोटेशन. और आर टू द पावर क्यूब क्या है? हमारा आइडेंटिटी है. समझ में आ रहा है? आर टू द पावर क्यूब आइडेंटिटी है, तो एस आर क्यूब क्या हो जाएगा? एस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एस. तो ये एस के इक्वल हो गया. ठीक है, और देखो ओरिएंटेशन क्या है? ए बी एन सी, ए बी एन सी, तो ये एस के इक्वल हो गया. तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो एलिमेंट क्या है? एस है. ठीक है, उसके बाद एस आर है, और उसके बाद एस आर स्क्वायर है. ठीक है, और एस आर क्यूब तो एस के इक्वल है. समझ में आ रहा है? तो ये रोटेशनल वाला और ये रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट हो गया.
ठीक है, तो D3 इज एलिमेंट्स ऑफ D3 आर दी 3 नंबर्स आर रोटेशनल वन एंड अदर 3 आर रिफ्लेक्सिव वन। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ D3। ओके, अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट है कि हमने जो रिफ्लेक्शन लिया ना इस एक्सिस के अबाउट लिया। ठीक है, और हम अगर इस एक्सिस के अबाउट भी अगर रिफ्लेक्शन ले तो भी यही आएगा। तो देखो बता देते हैं कैसे करना है इसको। देखो इस मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, देखो किसी एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हो, इसके अबाउट कर सकते हो या इसके अबाउट कर सकते हो। तो इसके अबाउट देखो क्या होगा, तो सी का यहीं का यहीं रहेगा, ये यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी बी देखो, तो ये एस आर स्क्वायर वाला एलिमेंट आ गया। समझ में आ रहा है, ये सेम है ना। अब इसके ऊपर 120 डिग्री लगाओ, तो ये क्या आ जाएगा देखो, रोटेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। देखो ए बी सी, ये वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक बार और रोटेशन करो, रोटेशन करने पे क्या आएगा देखो, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आएगा, यहाँ सी भी आ जाएगा। तो ए बी सी, देखो ए बी सी एस आर वाला आ गया। ठीक है, एक बार और रोटेशन करो, एक बार और रोटेशन करने पे क्या आएगा देखो, रोटेशन करने पे ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आएगा। ए बी सी देखो, ए बी एन सी एस आर स्क्वायर वाला आएगा। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट लो या इस एक्सिस के अबाउट लो या इस एक्सिस के अबाउट लो, एलिमेंट्स यही आएगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द concept of dihedral group. Okay, thank you.